कि यूके में जॉब नहीं है. Why student should choose abroad education? Why? Are we providing that kind of opportunities to our students? Are we training them as per the industry needs? Students should make. ऐसी कौन सी 3-4 चीजें आप उन्हें बताएंगे जब वो कंट्री सेलेक्ट करें? We have been ranked top 10th in employment. यूके में अगर किसी स्टूडेंट को जाना है तो Join Google at this particular position. Do this before they choose a country. They should choose a. Hi, welcome all of you to this Global Journeys podcast. And please be ready with lot of your questions which you can ask me in comments. Today we have a very special guest coming from UK and he is expert of studying abroad and he will be somebody who can tell us that where one should study, what one should study, what not, what to be done to create your 100% study abroad endeavor success. So today with us we have Anmol and he is a South Asian director for a very renowned university of UK. So we will be asking him a lot of questions and Anmol, thank you very much for coming. Thank you so much, Ji. It's a pleasure to be here again in Vadodara at your office and I have totally seen that firsthand. You guys assisting students, and when I enter the office, I understand what ethical counseling means. So I would like to, first of all, thank you guys for giving me this opportunity and congratulate for the amazing work that you have been doing. Thank you, sir. So you have mentioned ethical counseling. Absolutely. So tell me two things which differentiate that what is the ethical counseling and what is not. So Sumeshji, this is something I have been seeing for past 10 years of my experience in the industry, right? So when we represent a university, we get a chance to meet lot of partners all across the world. In my case, all across South Asia. So it's very important when a counselor, be it at your office, be it me, or be it anyone, when they are counseling the students, it's very important that it should be student centric first, right? We should have the kind of students in our mind. We should always do everything that it takes for the success of the students, right? In a lot of cases, and believe me when I say this, I have no shame, right, saying this, but I've seen a lot of counselors in different places, keeping their intentions in mind rather than keeping in mind the student benefits, right? So that is again what I told, right? When I see some company, when I see some people doing ethical counseling, that also gives me that confidence, right? That yes, we are creating difference in the lives, right? This is very important that we are doing, right? Our profession is something which is making not only the careers but lives, right? Students, parents, they trust you guys, they trust us, they trust you, they trust your team, right? When it comes to their students' future, when it comes to their sons, their daughters' future, right? So it is very important that the only thing that should be in our minds while we are counseling the student should be his or her success, nothing else. So this is what I meant with ethical counseling, sir. Yeah, so rightly said that is why in simple words, if it is a beneficial to students genuinely, that is the ethical counseling. Absolutely. And ethical counseling for me is like it should not be look good to the student, but it should be good for the student. Absolutely, sir. Absolutely. So from here we start. So tell me one thing, Anmolji, because you have very long experience in studying abroad and students counseling. Now in India also, hundreds of universities are there and all the courses programs are available. Then why student should choose abroad education? Why? Very, very good question. And I do understand that a lot of students, a lot of parents have this question, have this dilemma in their mind after they have completed probably high schools or after they have done bachelor's. So I'll tell you with an experience of myself, right? I have been a product of foreign education. I did my bachelor's in India, but I did my master's from USA, right? Now, it becomes very, very important, Somesh ji, to get that exposure.
So when you ask about the difference, the first and the most important difference lies with exposure, right? When we moved out, we got that exposure which has always helped us getting into those industries, getting into those professions, which probably, I'm not saying that Indian universities are not doing that, but there are things which probably would take time for them to get acquainted with, right? So yes, the quality of education in India is amazing, right? I agree to this point. But are we providing that kind of exposure to our students? Are we providing that kind of opportunities to our students? Are we training them as per the industry needs? No. So we are still at a phase where Indian universities are transitioning and are developing to reach out to those levels. So studying abroad not only is important for a student's future in terms of what kind of professions he will choose, but it is super important for his personal and personality development, right? When we move out, we meet different people from different, probably races, different countries. We get that kind of exposure that we absorb in ourselves, and which is the most important thing probably that have been instrumental in my own journey, right? And I want our students to get that exposure, right? So Yeah. it's just about time. Actually, you are rightly said. I'm surprised that even we say that India is also growing and prosperity is being spreading every year, everywhere. But अभी भी मुझे बहुत हंसी आती है कंपनीज के ऊपर भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि अभी भी स्टूडेंट से वो लोग इंटर्नशिप के लिए बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप कीजिए, जी। लेकिन वो लोग पे नहीं करते स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही बात अभी भी हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है पूरे इंडिया में, बड़े शहरों में भी नहीं है, छोटे शहरों की तो बात ही दूर है, जब स्टूडेंट अपना बैचलर्स का कोर्स कर रहा है, मे बी वो एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहा है, या वो कोडिंग पे कुछ कर रहा है, आईटी में कर रहा है, या फिर हॉस्पिटैलिटी में कर रहा है, लेकिन जब वो 4 साल का 3 साल का बैचलर कर रहा है या 2 साल का 1 साल का मास्टर्स कर रहा है, जी। उस वक्त भी अगर वो चाहे कि मैं जॉब कर लूँ तो उसके पास जॉब नहीं होती है। Absolutely. अगर जॉब वो करना भी चाहता है तो उसको इंटर्नशिप के नाम पे उसको कुछ पे नहीं किया जाता है। Right. तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, इंडियंस के साथ, कि एक तरफ सब लोग कहते हैं एक्सपोजर लो, एक्सपोजर लो, फिर बच्चा जब एक्सपोजर के लिए जाता है तो अल्टीमेटली उसको अपने घर से उस कंपनी में जाना होता है एक्सपोजर के लिए, उसका पेट्रोल लगता है, उसका खर्चा होता है, कंपनीज उसको इंडिया में वो खर्चा भी नहीं देती, और फिर सब कहते हैं कि एक्सपोजर दो। और यही बात जैसे ही बच्चा किसी भी डेवलप कंट्री में जा रहा है अब्रॉड, चाहे वो यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, या किसी भी कंट्री में जा रहा है अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए, तो उसको पहले ही दिन से पोस्ट स्टडी ड्यूरिंग स्टडी वीजा का वर्क का ऑप्शन मिल जाता है, पार्ट टाइम जॉब वो कर सकता है। जी, कर सकता है। वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको हेल्प करती हैं इन कैंपस ऑफ कैंपस उसको जॉब देने में। Absolutely. और वहाँ पर मैंने देखा है कि जॉब केवल एक्सपोजर के लिए नहीं, स्टूडेंट को लिविंग एक्सपेंस भी मिल जाता है, और वो एक्सपोजर के लिए खुशी खुशी जाता है, उसमें ड्राइव होती है Absolutely. कि चलो मेरा खर्चा भी निकाल रहा हूँ मैं, right. अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन भी नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल। और साथ में मैं सीख भी रहा हूँ। तो वो मॉडल पता नहीं इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहा है, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है सुमेश जी। इवन थोड़े दिन पहले मैं गिफ्ट सिटी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनका डाटा देख रहा था, एंड मैं देख रहा था कि वो किस पेस पे दे आर ग्रोइंग, राइट। दो वो यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन डिग्री इंडिया में दे रही हैं, राइट, जो कि अगेन बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बट स्टिल आप देखोगे तो स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज करने में आज भी कतरा रहे हैं। द enrollments are pretty less. Now the only reason is कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या साउथ एशियन स्टूडेंट्स, नेपाली स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स are not moving abroad just to get that degree. No, they are moving abroad to get that opportunity. Exactly. Right? Which the system out there has created for them. Yes, You yes. mentioned part-time. It's not only to earn money and support themselves, right? But that also gives them a feeling of responsibility, feeling of ownership. I have seen parents, मुझे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर जब हमारा बच्चा बाहर गया
एंड जब वो 1 साल बाद आया तो ही वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल, he was more smart, he was kind of respecting every little thing probably that we overlook. For example, जब हम लोग इंडिया रहते थे सुमेश जी, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को कभी वैल्यू नहीं करा. इंडिया में हमारी लाइफ इज pretty luxurious, right? We have our parents to support us, we have household helps to support us. The moment we go abroad, the importance of these small things, right? When my mother probably is working and also cooking food for me, I have that feeling of gratitude in my heart कि नहीं यार. And जब तक इंडिया में थे, we never thought of this, right? Exactly. So this change in mindset is very important, right? So मीन्स अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना है माँ बाप को, बहुत तो important उनको एक बार अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स डिग्री के लिए अब्रॉड जरूर भेजना चाहिए. फिर वो भले ही अगर वहाँ सेटल हो जाते हैं तो वो उनकी इच्छा है, नहीं सेटल होते तो वो वापस इंडिया में भी जब आएंगे तो डेफिनेटली वो, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि अगर आपने एक प्रोग्राम आप मान लीजिए बैचलर्स किया या मास्टर्स किया इंडिया में, या बैचलर्स किया मास्टर्स किया अब्रॉड में, और जब वो दोनों तरीके के बच्चे एक साथ बैठते हैं तो जो बच्चे अब्रॉड जाके पढ़कर आए हैं उनका लेवल ही अलग होता है. एब्सोल्युटली. उनका थॉट प्रोसेस, बिल्कुल. उनकी इंटीग्रिटी, उनमें हार्ड वर्किंग करने की जो कैपेसिटी होती है, उनको दुनिया के बारे में जो रियलिटीज पता है, जो वो सही डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, वो इंडिया में अपने घर से निकल के एक्टिवा पे बैठ के जॉब करने जाना या पढ़ाई करना एक ऐसा हो गया कि उनको तो कोई चैलेंज ही नहीं है. और लाइफ में जब चैलेंज नहीं है तो आप निखरते भी नहीं है. सुमेश जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी. बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है. जब तक पेरेंट्स वो स्टेप उनको नहीं लेने देंगे कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलें, खुद स्ट्रगल करें, खुद अपना रास्ता बनाएं, तब तक ये अचीवमेंट जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है. सही है. राइट. सर मुझे एक बात बताइए कि जब स्टडी अब्रॉड के बारे में बच्चे सोचते हैं ना तो उनके मन में आते हैं, कई कंट्रीज होते हैं जी. अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जब आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपके जो कंसल्टेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, वो एथिकल कंसल्टेंट होने चाहिए. अब जब अब्रॉड जा रहे हैं तो कंट्री सिलेक्शन में अभी बहुत सारी कंट्रीज हैं. कनाडा है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप में भी बहुत कंट्रीज हैं. अब तो जापान एंड साउथ कोरिया भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें आप उन्हें बताएंगे जब वो कंट्री सेलेक्ट करें तो उनको अपनी एस्पिरेशन, अपनी प्रोफाइल में क्या देखना चाहिए और उस हिसाब से कंट्री चूज करनी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस से क्या बता सकते हैं आप? No, amazing. Very good question, Sumesh ji. And another thing is that I would like to add कि it's not only कि consultant ethical होना चाहिए. Consultant ethical होने को students और parents should take this as a blessing. अगर उनको आप जैसा consultant मिल रहा है तो उन्हें उस चीज वो it is a bonus to them, right? The first and most important thing is student should make an informed decision. आजकल इंटरनेट है जो हमारे स्टूडेंट्स हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर जब उनको स्टडी अब्रॉड या जब उन्होंने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आई हैव सीन देम कॉलिंग देयर फ्रेंड्स, कॉलिंग पीपल हु डजंट नो एनीथिंग, राइट? So this is something they should relook on. They should invest time looking at the universities, courses, countries, policies, everything when they are making a choice. Now, the most important thing as per my understanding and experience, Somesh ji, is the course. Before they choose a country, they should choose a course. जो वो कोर्स करना चाहते हैं and they need to check this that course align with the industry needs or not. I have seen students कि मेरा इंटरेस्ट है फैशन में, मैं फैशन कोर्स करूँगा, पर जहाँ पे आप वो फैशन का कोर्स कर रहे हो क्या उसकी डिमांड है? एट द एंड वी हैव टू लुक एट लॉट ऑफ थिंग्स. क्या हमारी फैमिली उस चीज़ को स्पॉन्सर कर सकती है? क्या वो मेरे बजट में आता है? सो सबसे पहले हमें कोर्स सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि क्या वो कोर्स अलाइन कर रहा है विद द मार्केट नीड, विद द इंडस्ट्री नीड. अगर मैं मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, कर रहा है. अगर मैं सेमीकंडक्टर्स कर रहा हूँ, कर रहा है.
मेडिकल कर रहा हूँ, कर रहा है। बट अगर मैं फैशन कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता फैशन गलत कोर्स है, नो, आई हैव सीन स्टूडेंट्स achieving amazingly in fashion, but just doing fashion for a mindset that it's easy, that is very stupid, right? That is very stupid. Student, yes, they should follow their passion, but the decision should be informed and should align with their, kind, where do they want to see themselves in 10 years, right? Now, in terms of countries, right, Sumesh ji, in my experience, I have worked with universities in USA, I've worked with universities in Canada, and now I'm working with universities in UK and few universities in Europe as well, right? Now, I'll never say that this country is bad or this is right. That is very foolish of us to say. Why are we going out? Why are we moving from India? Is just because those are developed nations. The universities out there have something for us, right? It is upon student ki uski need kya hai and which country fits in. You are absolutely right when you say कि requirements align कर रही है कि नहीं, ये आप बता सकते हो स्टूडेंट को. Now, a student who wants to do a STEM course, probably AI. अगर वो स्टूडेंट आपके पास आकर के आपको ये कहेगा, सर आई वांट टू डू AI in Italy, you say, बेटे what are you saying? Italy is not a place for you. You should go to UK. Okay, you should go to US, not Italy. Now, if this is where you need a consultant, this is where you need a counselor, right? But you need to also feed the counselor कि सर मेरे को ये करना है, तभी वो आपको आंसर देगा कि अच्छा आपने AI करना है तो बेटे यहाँ करो. अच्छा, you want to join Google at this particular position, do this, right? Now, every country has pros and cons. Every country has pros and cons. But we need, or the counselors need to understand and make the students understand that, okay, if you are going to USA and we know safety is an issue, we know visa is an issue, our consultant would help us getting into a right university, getting into a right place, and then it is upon student to also verify that. For example, in UK, I'll give you a UK's example, right? I see everybody, sir, लंदन जाना है, लंदन जाना, मेरा फ्रेंड लंदन में जाता है. क्या कभी आपने उस फ्रेंड को फोन करके ये पूछा है कि मेरे फ्रेंड लंदन में आपको जॉब मिल गई, लंदन में आप खुश हो? नहीं. बट यस, क्योंकि वो लंदन गया, मुझे लंदन जाना. वेरी स्टूपिड, वेरी स्टूपिड. बिलीव मी सुमेश जी, लंदन के अंदर टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इज सुपर डिफिकल्ट. My university, Canterbury Christ Church University, is 40 minutes away from London at a place Kent. We have been ranked top 10th in employment. This is just one example. So if a student is going with a mindset that I want ROI, would he choose London? No. He would choose a place like Kent. He would choose a place which is, affordable and can give that opportunity. So there are a lot of factors, right, that students should have in mind. And then the most important thing is the consultant. See, I always tell this to everyone. If you can get an ethical counselor, if you can get an ethical consultant who's not after money, who's not after your money, who is after your success, who feels successful, seeing you successful, you have won. फिर आपकी क्या टेंशन खत्म. सही बात. We didn't got it, Somesh ji. I didn't got it and I suffered. Right? So probably this is in my heart that I don't want everybody else to suffer. So सही बात है कि हम हमारे एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं. और जब आप अपना पढ़ाई करने गए थे यूएस, तब आपको एक सही कंसल्टेंट नहीं मिले, सही चॉइस नहीं मिली, तो हो सकता है कि आपको उतना एडवांटेज नहीं हुआ स्टडी अब्रॉड का. लेकिन यही है, मेंटर यूनिवर्स में हमारी यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट एक थॉटफुल डिसीजन ले. क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ बच्चों को कि ये मत सोचो कि स्टडी अब्रॉड ऐसा है कि तुम लंदन के एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे और सामने पेड़ है पैसों का लगा हुआ, बस आपको पैसे निकालना है. Everything is not great. पैसों का पेड़ है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है. Absolutely. आपको आपकी लिविंग एक्सपेंस कहाँ पर आप बचा सकते हो, आप एक एक्रीडेटेड कोर्स कहाँ कर सकते हो, किस कोर्स की डिमांड आगे आने वाली है, 5 साल 10 साल के बाद क्या चलने वाला है, वो सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. और अगर वो नॉलेज आपके पास, आप चाहे गूगल से लो, चाहे AI से लो, या कंसल्टेंट से लो, कंसल्टेंट से आपको एक्सपीरियंस मिलता है. और
बाकी सब चीज़ों से आपको एक वेब में जो ब्लॉग्स डले होते हैं उनसे नॉलेज मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स आर सेम सेम, कि स्टडी अब्रॉड एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपने सही ढंग से कर ली तो आपकी 10x लाइफ अच्छी हो जाती है। बिल्कुल 10x सिंपल सा फॉर्मूला है, एग्रीड। क्योंकि आपको अब्रॉड में ही आपको पार्ट टाइम जॉब, पेड पार्ट टाइम जॉब मिलती है, अब्रॉड में ही आपको जो इंटर्नशिप्स पेड मिलती हैं, अब्रॉड में ही आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है वो भी पेड होता है, और उसी के साथ अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना वीज़ा भी एक्सटेंड करा सको, उसी में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप परमानेंट रेजिडेंट भी बन सको उस कंट्री के। तो ये इन कंट्रीज़ ने अपने पाथवे बना रखे हैं। बिल्कुल गलती यही स्टूडेंट करते हैं कि वो पूरे सही ढंग से डिसीजन नहीं लेते हैं, और इसीलिए हम ये पॉडकास्ट बनाते हैं। राइट। अनमोल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने तो बहुत सारी दुनिया देखी है, यूके में अगर किसी स्टूडेंट को जाना है तो यूके में उनको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, कुछ रीजंस के बारे में बताइए, और आज किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप बताइए जो आप रिकमेंड करेंगे इस पॉडकास्ट में। सर देखो, यूके में स्पेसिफिकली पहली बात तो ये है कि एवरी कंट्री हैज़ फ्यू प्रोग्राम्स सर, जहाँ पर वो कंट्री में स्टूडेंट को एज है। यूके में ये प्रोग्राम्स मेडिकल हैं, ये प्रोग्राम स्टेम है, एंड बिजनेस भी है, राइट। दिस इज द डिफरेंस दैट आई सॉ इन यूएस एंड यूके। यूएसए में मार्केटिंग और बिजनेस के जो प्रोग्राम्स हैं, दे डजंट प्रॉमिस यू दैट काइंड ऑफ कैरियर, बट इन यूके इवन बिजनेस के प्रोग्राम्स भी स्टूडेंट को बहुत अच्छी प्लेसमेंट दे सकते हैं। सेकेंड इज द लोकेशन। सी लंडन, आई हैव बीन टू लंडन. London is crowded like anything. So first, the most important advice that I give to student is, one, don't fall in the London trap. आपने लंदन जाना है, बिल्कुल जाओ। कैंट से 40 मिनट दूर है, और सिटीज़ भी हैं ऐसी लंदन के आउटस्कर्ट्स में 50 मिनट दूर, आधा घंटा दूर, सुपर फास्ट ट्रेन से आप जाओ। मैं नहीं कहता लंदन मत जाओ, लाओ, बट लंदन में पैसा खराब मत करो। It is not at all affordable. You should save as much money as you can of your parents, of yourselves as well, right? Secondly, go after quality. I see few universities, and it is very good that recently UKVI has categorized them in red. मैंने बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखी सर recently who were just making money. They were not for study. They were modern universities, probably just 4 small classrooms in a London rented building, and they are claiming that they'll place you. I'm very sorry. And it's not only me talking, UKVI has told them very clearly that you can't make these false promises. If a student is selecting a university, the least he should do is to see the placement records. इससे आसान वो कुछ नहीं कर सकता। For example, in a university that I represent, Canterbury Christ Church University, it's in Kent. अगर कोई बच्चा Canterbury Christ Church University आ रहा है, the least that we also expect और we also tell him is कि बेटे हमारी पिछले साल की प्लेसमेंट देखो। Our placement rate was 97%. Now you tell me who says कि UK में जॉब नहीं है। नहीं है, I agree नहीं है। I have seen students struggling. लेकिन यूके लंदन ही नहीं है। लंदन नहीं है, right. High skilled job, 75% of our students were placed in high skilled jobs. I am very thankful to UKVI now that they have made it mandatory that if you don't have this kind of data, you can't promise jobs to students. Because I was seeing small, like, 3 modern universities with 3 classrooms claiming that we'll give you a job. How can they give a job? Students need to see this at least. They should not follow just few those unethical agents who are just selling. Education is never to be sold, right? Education is something that is making their lives. So, and I'll not tell that these agents were wrong. I'll say these students were wrong, who just for a greedy motive, maybe they didn't wanted to give IELTS and they chose a university and kind of destroyed their life. This is very foolish of them. करेक्ट, राइट। सर अभी 2-3 ऐसे कोर्स बताइए, अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद जाना चाहता है, या मान लीजिए कि उसके पास 12th साइंस बायो है,
तो बिल्कुल। 2 कोर्स या 1 कोर्स उनके लिए बताइए, अगर कोई बच्चा है जिसका 12th साइंस मैथ्स है उनके लिए भी बताइए। सी, अगर हम ट्रेंड को देखें, अगेन यूके इज नोन फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स, नॉट ओनली बिकॉज यूके में मेडिकल कोई अच्छा ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं, बिकॉज वहाँ पे डिमांड बहुत है। Programs like nursing, programs in healthcare administration, programs in kinesiology, all these are in huge demand. Now we have a campus in Medway where all our medical programs are taught. It's a separate campus in a, it is like a hospital. It is like you're studying in hospital. It is like you're working in hospital. So if you'll go online, check CCCU Medway, you'll see our campus, you'll feel it is a hospital. For students who have biology, amazing programs. Amazing. They should choose these medical programs, which will guarantee them settlement. Right? सर ROI बताइए। ROI, sir, I'll tell you ROI. Now, let us see that way. The fee for a bachelor program at CCCU after scholarship comes around £14,000 a year. ओके। Right? The only thing probably I can guarantee in a way, see, I'm not allowed to give 100% guarantee, but yes, with lots of confidence and the data, what I can say is any student who has done a medical program at CCCU, you leave CCCU, any good accredited traditional UK university, right, they will earn at least 10 times of what they have spent. They need not to worry. Medical student, I'm talking about medical programs. They need not to worry about their living expenses. They need not to worry about their PRs or guaranteed settlement pathways. That will be 100% done. 100% for medical programs. And not only in UK, you leave UK, even in US. Students doing nursing, even in US. Students doing medical programs, even in US. Conversion programs, they don't need to mind. Now for the students who had science with maths, fintech, amazing programs, STEM programs, AI, machine learning. Let's follow the trend. Let's see what is in demand. Let us do that course. That's it. Unless and until you have a very strong inclination towards a program, then it's up to you. आपने कन्वर्जन प्रोग्राम बता के बारे में बोला, क्या बताइए Sir, basically UK में there are programs which students with a medical background can only do. Right? Supposedly, let us suppose we have a student who has done bachelor's in physiotherapy. Now, if there are few programs, right? For example, global health, right? Few medical programs that only those students with this kind of background can do. We call them conversion programs, right? Which gives them a pathway or an opportunity to be in UK, do that program, and if they want to follow, supposedly if they want to be a physiotherapist out there, they'll get time to give the licensing exams. So we call them conversion programs. There are very less universities offering conversion programs in UK now, but we are very lucky to have those with us. So that conversion program helped them to study for cracking that licensing exam? So that will not help them to, But to stay there? yes, to stay there. And when they have done that program, that will add on to what they have done in India. So we call it conversion program. Okay, Yeah. okay, that's good, sir. So students, you must be now understood that what are the things which need to be considered when we are thinking about studying abroad. अभी भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अब्रॉड को लेकर, करियर को लेके, हम डेफिनेटली उनके आंसर्स बहुत जल्दी से आपको देंगे। और मैं अनमोल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को जो सोच रहे हैं, जो भी 12th में है या ग्रेजुएशन में है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Very, very small message, students. This is your life. Take the ownership. Don't fall into shortcuts. Don't try to escape or evade. This is the right time where when you are making efforts, they will, bring you success, right? I see students just for a sake of not giving IELTS, getting into worst institutions. Don't do that.
you have that kind of knowledge, that kind of basics, that kind of consultants, right, to train you guys. Very good opportunity. Probably if even you are seeing this podcast, consider yourself lucky that you have this access. So use it, work on your profiles, work on yourselves, work on your confidence, and I can promise you success in any country you choose, right? So thank you so much, Sumesh ji, for this opportunity again. And let's see, I feel that my message could change some lives, could influence some lives, and I'll be grateful. Definitely, sir. My last question, Yes, please. which we will include somewhere. Uh, if they want to select a university in UK which is not properly in London, then Canterbury University is an good university. Kent, right. So, what are the 2-3 things you would like to share again, or maybe you want to focus on that why they should select or why they should apply for Canterbury University? Okay, so the most important thing, or the thing that I'm most proud of while I represent Canterbury Christ Church University, is the ROI. Again, we are top 10th ranked, and this is not a magazine ranking us. This is an official ranking. We are top 10 when it comes to employment. To be on this position is not a joke. To be top 10th in UK, I'm not talking about Kent, UK is not a joke. So we have that kind of structure, that kind of support, and yes, absolutely, the location that we are located in has always been on our favor, right? Secondly, to study in Kent and to study in London has very huge difference. One is affordability. You can live in Kent at a very affordable price, and as compared to London. Second is the part-time opportunities, very important for Indian students. To get a part-time opportunity in London, you It's need tough. to compete not only with the people who are living there, but from different nationalities. Third, safety, major concern. Major concern. We are one of the safest city. Kent is one of the safest city in the world. So this is something that gives an edge. Then Canterbury Christ Church has variety of programs and very industry aligned programs. So when a student decides to do some program, you'll see all our programs aligned with some, in a way with the industry, Okay. right? And we have everything to offer, right? There's no such course which Indian students want and we don't have, right? Okay. So there are lot of things, but amongst those, these are the primary things that I would like to highlight. Definitely. Thank you very much for Thank you, coming. sir. Thank you so much. Thank you so much.